डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। माई सेल्फ डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद। और आज के इस वीडियो में हम गामा फंक्शन से को कंटिन्यू रखते हुए एक नया टॉपिक लेंगे। टॉपिक का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन। डियर स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट ने इससे प्रीवियस वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उनको भी ज़रूर देखिए आप इसको, इस टॉपिक को और अच्छा समझने के लिए। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट अस स्टार्ट transformation of gamma function. So transform of gamma function tells 0 to infinity integral 0 to infinity e to the power minus px x to the power n minus 1 dx is equal to gamma n upon p to the power n, right? So we derive this, how it comes. So we take the left hand side 0 to infinity e to the power minus px x to the power n minus 1 dx. So we take some substitution here. Let px is equal to t, right? So what it will be happen here, differentiate both sides with respect to x. P dx is equal to dt, p क्योंकि कांस्टेंट है, राइट? सो dx इज इक्वल टू dt अपॉन p. क्लियर? नाउ वी हैव ट्रांसफॉर्म द फंक्शन x इनटू t, देयरफॉर लिमिट शुड बी आल्सो इन t. सो नाउ दिस इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म व्हेन वी पुट x इज इक्वल टू 0, t इज आल्सो 0, सो t इज इक्वल टू 0, लोअर लिमिट. व्हेन x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो p इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो अपर लिमिट इज इन्फिनिटी, राइट? व्हाट यू सब्स्टिट्यूट px इज इक्वल टू t, सो पुट px इज इक्वल टू t हियर e टू द पावर माइनस t, राइट? px इज इक्वल टू t implies x इज इक्वल टू t अपॉन p. सो इन प्लेस ऑफ x पुट t अपॉन p हियर, सो t अपॉन p होल टू द पावर n minus 1 and the value of dx is dt upon p, right? So this integrals equal to this integral, so 0 to infinity e to the power minus t to the power n minus 1 upon p to the power n minus 1 into p dt. So 0 to infinity e to the power minus t to the power n minus 1 upon p to the power n minus 1 into p to the power 1. Base are same, power will be at n minus 1 plus 1. 1 से 1 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 1 upon p to the power n आ गया. ये कितना आ गया? 0 to infinity e to the power minus t 2 to the power n minus 1 upon p to the power n dt, right? So 1 upon p to the power n can be taken out from the integral because this is constant. So 0 to infinity e to the power minus t 2 to the power n minus 1 dt, right? So remember this, what is this? This is gamma n, right? In very first video I give you the definition of gamma function. Gamma n is equal to 0 to infinity e to the power minus x to the power n minus 1 dx. So here 0 to infinity e to the power minus t to the power n minus 1 into dt, right? अगर वेरिएबल चाहे x में हो चाहे t में हो, मगर फंक्शन वही है, रिस्पेक्ट भी वही है और लिमिट भी वही है. सो दिस इक्वल टू gamma n upon p to the power n. So we have the transformation formula of gamma function 0 to infinity e to the power minus px x to the power n minus 1 dx is equal to gamma n upon p to the power n. Now we have transformation formula of gamma function integral 0 to infinity e to the power minus px x to the power n minus 1 dx is equal to gamma n upon p to the power n. So now we solve some problem regarding this transformation formula. So just take example number first. Integral evaluate integral 0 to infinity e to the power minus 3x
and x square dx like this, or write just x here, right? So solution integral 0 to infinity e to the power minus 3x x dx. You can write it integral 0 to infinity e to the power minus 3x x to the power 1, x to the power 1 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 minus 1 dx, right? Now compare this with the right hand side of the transformation formula. Here is integral 0 to infinity, right? E to the power minus px x to the power n minus 1. What we have write it n minus 1. 1 को हमने क्या लिखा 2 minus 1. तो here integral 0 to infinity e to the power minus px x to the power n minus 1 dx. So compare here, what is p here? P is 3. P is 3. And what is n here? N is 2. Right? Now this is just similar to this transformation formula, right? Integral 0 to infinity e to the power minus px dx, sorry, integral 0 to infinity e to the power minus px x to the power n minus 1 dx is gamma n upon p to the power n. And what is n in this case? N is 2 and p is 3. So this integral is equal to gamma n. What is n? N is 2 upon p to the power n. So p is 3 to the power n, right? This integral is equal to this transformation formula gamma n upon p to the power n. So n is gamma 2. Gamma 2 means 1 factorial, एक कम हो जाता है, upon 3 square is 9. So this value is 1 upon 9 because 1 factorial is 1. So we can say integral 0 to infinity e to the power minus 3x x dx is equal to 1 by 9. Again you can make option yourself. The value of this integral is equal to option A is 1 by 3, option B is 1 by 9, option C is 2 by 3, and option D is 2 by 9. As you can see, the answer is 1 by 9 of this integral. So therefore 1 by 9 is the answer. Option B is correct. Now move to the example number 2. Evaluate integral 0 to infinity e to the power minus 3x x square dx, right? So solution integral 0 to infinity e to the power minus 3x x square dx is equal to integral 0 to infinity e to the power minus 3x, and it can be 2 can be written as 3 minus 1 dx, right? Why we write 3 minus 1? Because we want to match this complete integral with transformation of gamma function. What was that? Integral 0 to infinity e to the power minus px x to the power n minus 1 dx is equal to gamma n upon p to the power n. Clear? Now compare this integral with this integral. 0 to infinity, write 0 to infinity e to the power minus px, here e to the power minus 3x, right? This is e to the power minus 3x, right? So compare with this, we get p is equal to 3. Here x to the power n minus 1, here x is x to the power 3 minus 1, right? So what is n here? N is again 3. Clear? Now using transformation formula, we will get the integral value of this is equal to gamma n, इधर साइड में लिख लीजिए gamma n upon p to the power n. What is n? N is 3. So gamma 3 upon p to the power 3. p to the power n है ना, तो p कितना आपके पास 3 और n कितना है 3, p to the power n. So here we have the integral 0 to infinity e to the power minus 3x x square dx is equal to gamma 3 upon p to the power 3, right? By comparing this integral with the transformation of gamma function. So we have gamma 3 means एक कम हो जाता फैक्टोरियल में, फर्स्ट वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था,
2 factorial, and 3 to the power 3 is 27, as you know. Factorial 2 means 2 upon, this is upon 27. So we have the integral 0 to infinity e to the power minus 3x x square dx is equal to 2 upon 27, right? Again, you can make option yourself. The value of this integral is option A 1 by 7, B 2 by 27, C 7 by 27, D 1 by 27. These two are very good option because these are closer. If a student some confuse here, yes, he can write or maybe tick on this option, but we will solve accurate in the exam also. So as we have accurately calculate here, the answer is 2 upon 27. So option B is correct, right? Now move to the example number 3. This is a good example. Integral 0 to infinity e to the power minus 2x root x dx. So solution, integral 0 to infinity e to the power minus 2x root x dx, right? So integral 0 to infinity e to the power minus 2x root x mean x to the power 1 by 2 dx is equal to integral 0 to infinity e to the power minus 2x, right? Again, we want to compare this integral with the transformation formula of gamma function, because this integral just looks similar to this integral, right? So what we did, as we done in earlier example in previous videos, what is this? This is x to the power 1 by 2. What you can write? How will you write? I have explained you earlier. You just plus 1 here and minus 1, right? And this is dx. So integral 0 to infinity e to the power minus 2x, this equal to x to the power 1 by 2 plus 1. This is 3 by 2 and this is minus 1, and dx. Here your left hand side, integral 0 to infinity e to the power minus 2x root x dx. Now again compare this integral with this integral. Here again gamma n upon p to the power n. So compare, here is p, here is 2. So the value of p is 2. Here is 3 by 2. And here is n. So the value of n is 3 by 2, right? So this integral with the help of this transformation formula gamma n upon p to the power n. So I will write here gamma n. What is n? N is 3 by 2. So gamma n upon p to the power n. What is p? P is 2 to the power 3 by 2, right? So gamma 3 by 2 can be written as you know in the previous videos, gamma 3 by 2 is 1 by 2 gamma 1 by 2 upon, you can write it also, what you can write it? Yes, you can write it 2 cube whole power 1 by 2, right? So here gamma 1 by 2 is root pi, as you know. 1 by 2, the value of gamma 1 by 2 is root pi upon 2 to the power 3 is 8, and 2 to the power 3 is 8, and 1 by 2 means square root. You can write it like this. So the complete answer is 1 by 2, yes, root 8 और root 8 को आप लिख सकते हैं 4 root 2, clear or not? Yes, you can write. और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 root 2. So the answer is pi upon 4 root 2. So the integral 0 to infinity e to the power minus 2x root x dx is a very good answer, pi upon 4 root 2. So again you can make option for this. Either the answer is pi upon, पहला आंसर ये लिख लेते हैं 4 root 2, दूसरा लिख लेते हैं रूट, जो सही आंसर है रूट लगा देते हैं इसमें, दिस इज रूट है,
because gamma 1 by 2 is root pi. Root pi upon 4 root 2, c लिख लेते हैं pi upon 2 root 2 और d लिख लेते हैं root pi upon 4, right? So as you can see, the value of this integral is under root pi upon 4 root 2. So which option is correct? B option is correct, right? Now we move to example number 4. Example number 4 is evaluate integral 0 to infinity e to the power minus 4x upon root x dx. So let's go for solution. Solution, we have integral 0 to infinity e to the power minus 4x upon root x dx. Integral 0 to infinity e to the power minus 4x, रूट एक्स को आप लिख सकते हैं एक्स टू द पावर हाफ, और जब ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा न्यूमरेटर में एक्स टू द पावर माइनस हाफ डी एक्स, राइट? 0 टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस 4x, ये मैंने आपको बता रखा है। जब हम इसको गामा फंक्शन से भी कंपेयर करते थे इस टाइप के इंटीग्रल को, तो एक्स टू द पावर में जब हमारे को पता है एक्स टू द पावर n-1 के फॉर्म में लिखना पड़ता है, तो हमने क्या करा था, पावर में 1 एक्स टू द पावर में 1 ऐड किया था और 1 सब्ट्रैक्ट किया था, सो दैट वी कैन कंपेयर दैट इंटीग्रल विद द गामा फंक्शन. इन सिमिलर मैनर, इफ वी वांट टू कंपेयर दिस इंटीग्रल ऑफ द टाइप integral 0 to infinity to the power minus px x to the power n minus 1 dx, we did here, we add 1 and we subtract 1, right? So minus 1 by 2 plus 1, this is 1 by 2, integral 0 to infinity e to the power minus 4x, and this is x to the power 1 by 2 minus 1 dx. Clear? Now again compare this integral with this integral. Here is p and here is 4. So the value of p is 4, and what is n here? N is 1 by 2. As you can see, n is here x to the power n minus 1, here x to the power 1 by 2 minus 1. So n is 1 by 2, n is half. Clear? N is half. So the value of this integral with the help of this transformation formula of gamma function, what is gamma n upon p to the power n, and what is n here? What is n? N is 1 by 2. So gamma 1 by 2 upon p to the power n. Oh, very nice question this is, right? So the answer is gamma 1 by 2 is root pi, and as you know 4 to the power half यानी square root of 4, this is 2. So the value of this integral 0 to infinity e to the power minus 4x upon root x dx is equal to under root pi upon 2. Again you can make option yourself. The value of this integral is I will rub here. The value of this integral is option A pi by 2, option B pi upon root 2, option C root pi upon 2, and option D is minus root pi upon 2. So as you can see, when we evaluate this this integral, the value is root pi upon 2. So the value of this integral is, which option is correct? Option C, root pi upon 2. Now move to example number 5. Evaluate integral 0 to infinity e to the power minus 2x x to the power 3 by 2 dx. Now similar manner you can solve. Solution, integral 0 to infinity e to the power minus 2x x to the power 3 by 2 dx. Again compare this integral with transformation of gamma function. What we get, 0 to infinity e to the power minus 2x. तो कंपेयर करने से पहले हम इस इंटीग्रल को वैसा ही बनाना चाहेंगे जैसे इंटीग्रल है x to the power n minus 1, here x to the power 3 by 2. As you know, as we did in these integrals, what we did,
+1 and -1, so that here, like here, x to the power n minus 1, we can also obtain here x to the power n minus 1. So integral 0 to infinity e to the power minus 2x, what it will be? 3 by 2 plus 1 is 5 by 2, x to the power 5 by 2 minus 1 dx, right? Again, compare this integral with this transformation of gamma function. What we get here is 2 and here is p. So the value of p is 2. Here is 5 by 2, here is n. So the value of n is 5 by 2, right? Now use this transformation as this integral is similar to this integral, right? So the value of p is 2 and the value of n is 5 by 2. So the answer is gamma n upon p to the power n. The value of the integral 0 to infinity e to the power minus 2x and x to the power 3 by 2 dx. Clear? So what is n here? N is 5 by 2. So I will write 5 by 2 upon p to the power n. So t to the power 5 by 2. So the value of gamma 5 by 2, we know the value of gamma 5 by 2 is 3 by 2, 1 by 2 and root pi. This is 2 to the power 5 by 2. So the 3 upon 4 into 2 to the power 5 by 2, right? And this is root pi. Again 2 to the power 5 by 2, अगर आप 2 to the power 5 by 2 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ इसको. 2 to the power 5 by 2, इट्स मीन 2 to the power 5 whole power 1 by 2. 2 to the power 5 is 32. करके देख लीजिए. 1 2 3 4 5 2 2 4 2 8 2 16 2 32, राइट. 2 to the power 5 is 32 and 30 to the power 1 by 2. 30 to the power 1 by 2 means 32 का स्क्वायर रूट. इसको आप क्या लिख सकते हैं? 16 into 2, right? So 4 root 2, 4 root 2, right? So the value of 2 to the power 5 by 2 is 4 root 2. तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? Remember this is in numerator, so I will write here 3 root pi and 3 root pi upon 4, and the value of this integral, the value of 2 to the power 5 by 2, we get 4 root 2. So right here 4 root 2. So very interesting option if we will going to make 3 root pi upon 16 root 2. So 3 root pi upon 16 root 2, right? So students, you make option yourself, and as you know this is the right option, obvious. 3 root pi upon 16 root 2. Now move to example number 6. Evaluate integral 0 to infinity e to the power minus 2x x to the power minus 3 by 2 dx. Solution: integral 0 to infinity e to the power minus 2x x to the power minus 3 by 2 dx is equal to integral 0 to infinity e to the power minus 2x. अगेन स्टूडेंट्स माइनस 3 by 2 यहाँ पर है, तो मैंने आपको बताया था +1 कर लीजिए, -1 कर लीजिए, ताकि हम इस इंटीग्रल को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन, ये मैंने लिख रखा है, मैंने आपको अभी पहले भी बताया था, ये इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e to the power minus px x to the power n minus 1 dx इक्वल गामा n अपॉन pn. तो हम इस इंटीग्रल से कंपेयर कर पाए इस इंटीग्रल को, हमारे को यहाँ पर क्या बनाना है? n-1 की फॉर्म बनानी है, इसलिए मैंने क्या करा? 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया. -3 by 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? -1 by 2, राइट? सो ये -1 by 2 हो गया और ये -1 ये रहा. ओके, सो now we have integral 0 to infinity e to the power minus 2x x to the power minus 1 by 2 minus 1 dx. Now compare this integral with this integral, which is transformation of gamma function. Integral 0 to infinity e to the power minus px x to the power n minus 1 dx is equal to gamma n upon pn. ये हमने कैलकुलेट किया था अभी. तो अब कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों इंटीग्रल्स को. यहाँ पर p है, देख पा रहे हैं आप, दोनों सिमिलर इंटीग्रल हैं.
तो हम कंपेयर करें तो p की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई आपके पास 2 और n आपके पास n, यहाँ पर n है और यहाँ पर n कितना -12, तो n कितना आ गया आपके पास -12, राइट। तो अब इसको यूज़ कर लीजिए इस रिजल्ट को 0 to infinity e to the power minus px x to the power n minus dx gamma n upon pn p to the power n, sorry. So what is n here? N is -12 and p is 2. So we have gamma n. What is n? N is -1/2 gamma n upon p. What is my p? P is 2, right? When we compare these two integral, p is 2, p to the power n, right? Now here as this is 2 to the power -12, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 2 to the power half हो जाएगा, 2 to the power half, and this is into gamma -1/2. 2 to the power half is √2, so √2 and gamma -12, right? So 0 to infinity e to the power -2x x to the power -3/2 dx. Now we will find the value of gamma -12. आप इस वैल्यू को प्रीवियस वीडियोस में भी देख सकते हैं, फिर भी मैं एक बार कैलकुलेट करता हूँ इसको। यहाँ पर वी हैव अ रिलेशन विच इज रिकरेंस फंक्शन और रिकरेंस रिलेशन gamma n plus 1 is equal to n gamma n, right? So gamma n is equal to gamma n plus 1 upon n, right? मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? गामा -12 की। सो गामा -12, n की जगह क्या पुट किया मैंने? -12। यहाँ पर n की जगह -12 पुट कर लीजिए, -1/2 + 1 और ये हो गया -1/2, राइट? -12 + 1 कितना हो जाएगा? +12 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? गामा हाफ, और ये -2 ऊपर चला जाएगा तो -2 हो जाएगा, -1/2 है ना, तो कितना हो जाएगा? -2 and gamma 1/2. And as you know, the value of gamma 1/2 is √π. So minus of gamma -12 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई -2 √π। गामा हाफ की वैल्यू कितनी होती है? √π होती है। क्लियर? सो जस्ट प्लग द वैल्यू ऑफ गामा ऑफ -12 यहाँ पर पुट कर लीजिए, कितना हो जाएगा? √2, और ये वैल्यू जो आई आपकी ये कितने आ गई? -2 √π। सो इनटू -2 √π, राइट? सो आपने शायद ये नोट कर लिया होगा। तो द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? अब मैं इसको चलो नेक्स्ट नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पर, -2 √2 √π, या आप इसको ऐसे लिख लीजिए क्योंकि दोनों अंडर रूट में है, -2 √2π। √a इंटू √b भी लिख सकते हैं ना, तो -2 इंटू √2π। अंडर रूट के अंदर कितना आ गया? अंडर रूट के अंदर आ गया, सॉरी, 2π। सो द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज -2 √2π। Got it? So again you can make option yourself. Now move to example number 7. Evaluate integral 0 to infinity e to the power -2x x to the power -5/2 dx. Again we have solution integral 0 to infinity e to the power -2x x to the power -5/2 dx. Integral is equal to integral 0 to infinity e to the power -2x, फिर से -5/2 है, हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन से कंपेयर करना चाह रहे हैं, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर -px x टू द पावर n-1 dx से, राइट? तो फिर हमने क्या करा इसमें? वही +1 किया और -1 किया। -5/2 + 1 is -3/2, सिंपल, एंड दिस इज -1, राइट? तो अब इस इंटीग्रल को इस इंटीग्रल से कंपेयर कीजिए, वही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन से। यहाँ पर p है, यहाँ पर कितना है? 2 है, द वैल्यू ऑफ p इज 2। यहाँ पर n है, यहाँ पर कितना है? -3/2 है, -3/2 आ गया, राइट? नाउ
the value of this integral using this transformation formula is gamma n upon p to the power n. And what is n? N is minus 3 by 2 upon p to the power n. What is p? P is 2 to the power minus 3 by 2, right? So ये नेगेटिव पावर है, ऊपर चले जाएगी प्लस हो जाएगी 2 to the power 3 by 2 and this is gamma minus 3 by 2, right? And 2 to the power 3 by 2 को क्या लिख सकते हैं आप? 2 to the power 3 is 8 और हाफ लगाए तो 8 की पावर हाफ, दिस इज 8 to the power 1 by 2 into gamma minus 3 by 2, right? 8 to the power half means स्क्वायर रूट ऑफ 8. स्क्वायर रूट ऑफ 8 को आप क्या लिख सकते हैं? 4 into 2. स्क्वायर रूट ऑफ 4 into 2. 4 का स्क्वायर रूट कितना आ गया? 2 आ गया, तो ये हो गया 2√2, राइट, इंटू गामा माइनस 3 by 2. नाउ मैं आपको गामा माइनस 3 by 2 की वैल्यू इज इक्वल टू 2√2 इंटू गामा माइनस 3 by 2. अब मैं आपको गामा माइनस 3 by 2 पहले हम यहाँ पर अलग से फाइंड करना मैं आपको बताता हूँ. वैसे आप इन पर्टिकुलर वैल्यूज़ को समझने के लिए एक सेपरेट वीडियो है, इस पे आप उसको भी देख सकते हैं. तो फिलहाल यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ. वी हैव अ रिकरेंस रिलेशन गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n. सो गामा n की वैल्यू यहाँ से मैंने फाइंड करी गामा n प्लस 1 अपॉन n, राइट. तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? गामा माइनस 3 by 2 की. तो मैंने n की जगह क्या पुट कर लिया? माइनस 3 by 2. राइट साइड में भी n की जगह माइनस 3 by 2, यहाँ डिनोमिनेटर में भी माइनस 3 by 2. सो माइनस 3 by 2 प्लस 1 इज गामा माइनस हाफ और ये माइनस 3 by 2 है तो माइनस 2 by 3 हो जाएगा. अभी हमने इससे जस्ट पहले एग्जाम्पल में गामा माइनस हाफ की वैल्यू आपको मैंने बताई थी, माइनस 2√पाई आई थी. तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर लिए गामा माइनस हाफ की वैल्यू माइनस 2√पाई. तो ये कितना आ गया? माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 4/3√पाई. सो द वैल्यू ऑफ गामा माइनस 3 by 2 इज 4/3√पाई. तो अब यहाँ पर ये वैल्यू हम पुट कर लेते हैं गामा माइनस 3 by 2 को. मैं इसको इधर सॉल्व कर लेता हूँ. 2√2 ये पहले से था आपका और ये गामा माइनस 3 by 2 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 4/3√पाई. सो ये होगी 8/3 √2 इंटू √पाई √2 पाई अंडर रूट ऑफ 2 पाई. सो दिस वॉज योर क्वेश्चन. इंटीग्रल 0 to infinity e to the power minus 2x and x to the power minus 5 by 2 dx. So the value of this integral is this. Now example number 8. Evaluate the integral 0 to infinity e to the power minus 3x x to the power minus 3 by 4 dx. Right? Solution. Integral 0 to infinity e to the power minus 3x x to the power minus 3 by 4 dx. Again, similarly, we can compare this integral with the transformation of gamma function. Integral 0 to infinity e to the power minus px x to the power n minus 1 dx. Therefore, we just add plus 1, sorry, we add 1 and subtract 1 in the power minus 3 by 4 plus 1 minus 1. माइनस 3 by 4 प्लस 1, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 by 4 आ जाएगा, राइट, प्लस 1 by 4, राइट, 1 plus 1 by 4 and this is minus 1. So now compare this with this integral. What you will get? Here is 3, here is p. So the value of p is 3, here is 1 by 4, here is n. So the value of n is 1 by 4. Now use this result. Integral 0 to infinity e to the power minus px x to the power n minus 1 dx is equal to gamma n upon p to the power n. Similarly, here integral 0 to infinity e to the power minus 3x x to the power 1 by 4 minus 1 dx is equal to gamma n upon p to the power n. What is n? N is 1 by 4. So gamma 1 by 4 upon p to the power n. What is p? P is 3 to the power 1 by 4.
स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया था गामा 1/4 जो इसकी वैल्यू है हम इसको क्लोज फॉर्म में ऑब्टेन नहीं कर सकते, जैसे कि हमने गामा 1/2, गामा 3/2, गामा -1/2, गामा -5/2, गामा -3/2 कैलकुलेट किया था, राइट। सो इसलिए हम इसको ऐसे लिखे रहने देंगे। नाउ मूव टू द एग्जाम्पल नंबर 9। Here example 9, integral 0 to infinity e to the power minus 2x x to the power minus 5/4 dx. Solution, integral 0 to infinity e to the power minus 2x x to the power minus 5/4. Again comparing this integral with the transformation formula, we have minus 5/4 power, तो हमने वही +1 किया और -1 किया पावर में। minus 5/4 plus 1 कितना हो जाएगा? minus 5/4. Yes, this is minus 1/4. So I have x to the power minus 1/4 minus 1 dx. Again compare this integral with this integral. Here is p and here is 2. So the value of p is 2. Here is n and here is minus 1/4. So the value of n is minus 1/4. Right? Now use this result. Integral 0 to infinity to the power minus px x to the power n minus 1 dx is equal to gamma n upon p to the power n. So this integral is equal to gamma n upon p to the power n. What is n here? n is minus 1/4. So gamma minus 1/4 upon p to the power n. What is p here? p is 2, p to the power n. What is n here? Minus 1/4. So the value of this integral is this. That is gamma minus 1/4 upon 2 to the power minus 1/4. Again स्टूडेंट गामा 1/4 की वैल्यू हम क्लोज फॉर्म में ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम इसको गामा 1/4 ही लिखे रहने देंगे, राइट। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आए होंगे। गामा फंक्शन से रिलेटेड जो प्रीवियस वीडियोस हैं मेरे, उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक देख सकते हैं, और आपको अगर ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।